Good morning, class 10 students. As you know, we are doing locus, and in last class we have done what is the definition of perpendicular bisectors, medians, altitudes, and angle bisector. So in this class we will study how they are concurrent. Concurrent का मतलब होता है when three or more than three lines meet at one point. तो इस क्लास में हम देखेंगे कि ये कैसे concurrent है, मतलब अगर दो altitude जहाँ से पास करेगा तो तीसरा वहीं से पास करेगा. You know, this is called concurrency. Similarly, if two medians pass through a point, then the third median will also pass through that point. Similarly, two perpendicular bisectors meet at a point, then the third perpendicular bisector will also pass through the same point. And if two angle bisectors meet at a point, then the third angle bisector will also pass through that point. This is called concurrency of the various line segments that I have talked about in a triangle. तो अगर पहला प्रूव करते हैं अपन एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड. तो लेट्स सपोज करो आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी. ठीक है, आपको प्रूव करना है कि दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से पास करेंगे. तो वी आर अज्यूमिंग दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ से साइड बी सी, ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी एंड साइड ए सी. दे आर मीटिंग एट से पॉइंट ए ओ, एंड आपको प्रूव करना है दैट the perpendicular bisector of the third side. Okay, so what I am doing, I am taking these two sides and then I will prove for BC. So the perpendicular bisector of AB is this one, perpendicular bisector of AC is this one. Okay, and we can name this as, this point as O, let this point be D, let this point be E. Now you have to prove that, okay, let's make this as E or D, we can make anything. Okay, E and D, E and F. Okay, E and F, and D is the point. Now I am joining O to D, and let D be the midpoint of BC. Let D be the midpoint of BC. Okay. Now E, EO. What is EO? Given we can write here. EO is the perpendicular bisector of AB. अच्छा, perpendicular bisector क्या होता है? ये locus से भी related है. All the points on perpendicular bisector will be equidistant from A and B. This you can prove by congruency also. So EO is the perpendicular bisector of AB. Similarly, FO या OF is the perpendicular bisector of AC. ठीक है, ये दो चीजें मिल गई आपको, EO and OF. Now once you get this, you can directly either you can join them like this and like this. इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो. ठीक है, तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉम्पोनेंट है और ये दोनों ट्रायंगल कॉम्पोनेंट है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है 90 डिग्री बना रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहा है. ठीक है, या फिर आप लोकस को लिख लो. तो यू कैन राइट दैट O is equidistant from A and B. Similarly, O is equidistant from A and C. Therefore, AO is equal to BO is equal to CO. So I can write first O is equidistant from A and B. Okay. AO is equal to BO. Similarly, you can write here similarly AO is equal to CO. क्या मिला हमको? AO is equal to BO is equal to CO. AO is equal to BO is equal to CO. ये मिल गया आपको. ठीक है, अब नाउ से let D be the midpoint of BC. इस पे ध्यान दो, let D be the midpoint of BC. तो आपको क्या करना है, midpoint से O को ज्वाइन कर देना है. ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि एंगल D is 90 डिग्री. So what you will do, this will prove OBD and OCD congruent. कैसे congruent हो गई? OB is equal to OC proved above. OB is equal to OC. So I am writing it here. Okay, OB is equal to OC proved above. ठीक है, OD is equal to OD common and BD is equal to CD. BD is equal to CD. ठीक है, so BD is equal to CD, OD is equal to OD, and OB is equal to OC. So now these three sides are equal, and if three sides are equal by SSS triangle OBD
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी। ठीक है, तो सीपीसीटी से क्या मिलेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, विल गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। Now, but they are forming linear pair. This is 180 degree. So we can write twice angle 1 is 90. So angle 1 is 90 degree. That means OD is a perpendicular also, bisector also. Hence OD is a perpendicular bisector. OD is a perpendicular bisector. ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो तीसरा बाइसेक्टर है, द थर्ड साइड बाइसेक्टर ऑल्सो पासेस थ्रू ओ, मतलब दोनों तो पास करी थी, दो लाइन तो एक पॉइंट पे मीट करती हैं, दैट इज एसेंशियल। सो दीस टू लाइंस आर मीटिंग एट ओ एंड द थर्ड लाइन व्हिच इज जॉइनिंग द मिड पॉइंट बिकम्स द परपेंडिकुलर आल्सो, मतलब ओडी इज आल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉनकरेंट। दिस वी हैव प्रूव्ड। What you prove? Perpendicular bisectors of the sides in a triangle are concurrent. So you can pause and rewind and check it again what I have done here. It's a very simple proof. इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर कॉन्करेंट होता है। तो एंगल बाइसेक्टर के कॉन्करेंसी के लिए आप क्या करोगे, सपोज कर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, फिर से देखते हैं, दो एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर बना के थर्ड को वहां से we'll check what is happening. So BO, let BO be the, and the previous one O is circumcenter. We will make them intersect at a point C. So let BI and CI. These are angle bisectors of angle B and angle C. So BI and CI are the angle bisectors. Of angle B and angle C. Okay, these are the angle bisectors. Angle मतलब angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Now to prove AI is the angle bisector of angle A. ठीक है, ये प्रूव करना है, तो आप ज्वाइन कर दो, ज्वाइन AI. Now to prove this you will have to draw some perpendiculars. Okay, तो आपको perpendiculars draw करना पड़ेंगे. So let's see, यहाँ से from I let me draw one perpendicular. Okay, this one from here let this be M N and from here O. So now M and O are the three perpendiculars drawn from I to side BC, AB and AC. Perpendiculars draw कर दिया. Perpendicular draw करने से क्या होगा, let us see. When you have proven that, now see, are these two triangles congruent to this? This is 90. Okay, 1 is equal to 2, 3 is equal to 4. अब आप देखो BNI and BMI, which triangle? We are not taking these two triangles. हम ये वाला triangle ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे, ये वाला ले रहे हैं. कौन से? BNI और BMI. तो BNI और BMI triangles. Okay, which triangle? BNI and BMI. आप ऐसे एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू साइड्स. सो वी कैन राइट I is equidistant from AB and BC. तो NI is equal to MI, और या फिर कॉन्ग्रुएंसी से जैसे मैं प्रूव कर रहा हूँ वहाँ पे. So we can write, let this angle be 5 and 6. 5 and 6 are 90. 1 and 2 are equal. BI is equal to BI common. So by AAS, so I can write 5 is equal to 6, 1 is equal to 2, BI is equal to BI or IB. Therefore, triangle BNI is congruent to triangle BMI. So therefore, by CPCT we can write NI is equal to MI. ठीक है, CP. और लोकस का भी आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो यहाँ पे, दैट सिंस इट इज द एंगल बाइसेक्टर, सो दैट एवरी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू साइड्स. सिमिलरली, अब आपको आगे प्रूव नहीं करना, सिमिलरली करना है. सिमिलरली यू विल राइट IO is equal to IM, that is MI is equal to OI.
mi is equal to oi. So we can write ni is equal to mi is equal to oi. ठीक है. Now you will have to consider this triangle ANI and AOI. Triangle ANI and AOI, right? Now these two triangles are also congruent, as you can see. This is 7 and 8, and we have just proved this side is equal to this side. Ni is equal to IO, the OI, and AO is equal to AI is equal to AI common. Therefore, by right angle hypotenuse side RHS. So by RHS I am writing angle 7 is equal to angle 8. Ni is equal to OI, proved above. This is right angle. You can write all the reasons. This is right angle. This is proved above. ठीक है. और AI is equal to AI. ठीक है. Common. Therefore by RHS triangle ANI is congruent to triangle ANI and AOI. Hence by CPCP we can say that what this angle, suppose 9 is equal to 10, angle 9 is equal to angle 10 CPCT, or in other words AI is the angle bisector of angle A. Thus we have proved that all the three angle bisectors pass through I. So these are the two definitions we have done. In the next class we will do the altitudes and the medians, and meanwhile there will be a test also on this much part of your locus, that which we have studied. Okay, so small tests, all of you can take that test and give you a good performance. So see you in the next class.